this video, we are going to discuss integration of type px plus q divided by quadratic function or px plus q divided by square root of quadratic function or px plus q multiplied by square root of quadratic function. In previous video, px plus q was not here and here we have only 1 upon quadratic, 1 upon root quadratic and directly square root of quadratic. These type of questions we have done in previous video. Now, in this type, if linear function px plus q is here, कोई भी linear function हो सकता है 2x plus 1, 3x plus 5 or anything. This is extra here in numerator, here also in numerator, here in multiplication. So, these type of questions will have certain rules for working or working steps. First step will be step 1. What should we do? We will take this px plus q, जो भी px plus q है, we will take this as constant a into derivative d by dx of ax square plus bx plus c, derivative of ax square plus bx plus c and then plus another constant capital B. जो भी यहाँ लीनियर फैक्टर होगा वो x भी हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है, 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, उसको हम लेंगे इक्वल्स टू a ही रहेगा, हम बाद में वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल A एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट प्लस b. Then second step will be compare both sides to find value of a and b. a and b are constants, यहाँ हमने assume किया है. Now by comparing both sides we will find value of a and b. Then third step will be to replace px plus q, जो भी ये px plus q है क्वेश्चन में, we will replace that px plus q by this thing a into derivative of d by dx of ax square plus bx plus c plus b. And then step 4, split the question. जब px plus q की जगह पर ये पूरा पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये एक सिंगल फंक्शन था, अब इसके दो पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2. अकॉर्डिंग टू दीज टू पार्ट्स क्वेश्चन विल बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स. इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. We will make it split given function into 2 parts. One part with A and second part with B. सेकेंड पार्ट विद बी. हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे, क्वेश्चन के 2 पार्ट कर देंगे. एक पार्ट में ए वाला पार्ट ए के साथ क्वेश्चन होगा और सेकेंड में बी के साथ क्वेश्चन होगा. दिस विल बी वर्किंग रूल. दिस वर्किंग रूल विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन वी डू अ क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर. सो दीज आर द टाइप्स. वर्किंग फॉर ऑल टाइप इज सेम. So, I am taking one example, example 1 of type 1. Example 1. Suppose we have to integrate 2x plus 3 divided by x square plus 6x plus 3 dx.
Now, in previous video we have done 1 upon this thing by completing a square method. Here we have one linear factor px plus q along with this question, this quadratic function. So, first step working rule, according to working rule we will take px plus q equal to a into derivative of quadratic plus b. तो ये होगा take 2x plus 3 equals to a into derivative of this part. Directly I am taking derivative of the quadratic part is 2x plus 6 plus b. This is step 1. Take linear part equals to a into derivative of quadratic plus b. Here a and b are any two constants. Now, step 2, compare both sides to find a and b. Comparing these two sides. If I comparing both sides, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ if I open up the bracket it is 2a. So comparing both sides, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, I am getting coefficient of x is 2 equals to coefficient of x is 2a here. That means a is equals to 1. एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. Similarly, now I will find value of b by comparing constant terms both sides. Comparing constant terms both sides. Here we have 3 in LHS and RHS constants क्या क्या हैं? First constant is 6a. If I open up whole thing, 6a plus b. All constant terms of RHS are 6a plus b. All constant terms of LHS is 3. Now comparing these two, we have value of a already. Put value of a here. So this is 3 equals to 6. A is 1. Just got it. Plus b. Now value of b is minus 3. So step 1, take linear part equals to a into derivative of denominator quadratic part plus b. Then compare both sides. Coefficient of x is 2 equals to 2a. Now get a value of a is 1. Now comparing constant terms both sides. Here constant is 2. Here constant is 6a plus b. So value of b is minus 3. Now what we have to do, replace this 2x plus 3 px plus q, step number 3, replace px plus q by this thing. Now I will replace this 2x plus 3 by this thing because we have taken this in this manner. So I can write 2x plus 3 upon x square plus 6x plus 3 dx as this px plus q is replaced a into 2x plus 6 plus b whole divided by what? X square plus 6x plus 3 dx. Ideally I should write value of a and b here only. a और b की वैल्यू यहीं पुट कर देनी चाहिए, बट आपको समझाने के लिए अभी मैंने a और b लिखा है because we have value of a and b. Now I can put value of a and b here. You can write here where a is 1, b is minus 3. अगर मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पुट करता हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, I will again get this thing. That means 2x plus 3 can be split or broken down into two parts as this one. Now if value of a is 1, b is minus 3, now I will split this question. Step number 4, working rule, that is we will split the given function into two parts, one part with a and second part with b. Now we have value of a and b, we will split this upon this denominator and this upon this denominator. First is a क्या है 1, 2x plus 6 divided by
x square plus 6x plus 3 first part plus b which is minus 3 upon x square plus 6x plus 3 dx. स्प्लिट कर दिया, फर्स्ट पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर, सेकेंड पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर और वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो सब्सटीट्यूटेड. नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस आउट ऑफ वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के हमने दो क्वेश्चन बना दिए हैं इंटीग्रल्स, फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकेंड इंटीग्रल. फर्स्ट इंटीग्रल will always be solved by substitution method. We can directly see if denominator is taken as t, then numerator is dt. If I take t as x square plus 6x plus 3, then dt will always be like 2x plus 6 into dx. Means this is solvable by substitution method, dt by t type. And how to solve this one? This is direct question of completing square, just like we did in previous video. Minus 3 constant है, बाहर लिख देंगे. It is 1 upon quadratic and we know how to solve it by completing square. x square plus 6x plus 3 इसको हम perfect square बना सकते हैं by completing square method. x square का कोफिशिएंट हटाया, वो तो ऑलरेडी नहीं है, 1 है. वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज गॉन. नाउ कोफिशिएंट ऑफ x इज 6, इसका हाफ है 3, 3 का स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट. x स्क्वायर प्लस 6x प्लस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज 9, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9. नाउ दिस थिंग इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3, 6. So, this part is to be solved by completing square, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था. This part is to be solved by substitution method. Now we can integrate integral part 1 and part 2. Now question is divided into two parts, one by substitution method dt by t, second is minus 3 को बाहर लिया, completing square. It was 6, so we make it root 6 whole square. dt by t, its integration will be log modulus of t minus 3 1 by x square minus a square. Integration of this type is 1 by 2a. Formula log x minus a divided by x plus a plus c. Now replace this value of t and we have now final answer. X square plus 6x plus 3 minus, I can rationalize by root 6, root 6 से ऊपर नीचे multiply किया, this is 3 root 6 by 12, then we can say root 6 by 3 by 12 will be 4 log of this thing. So now we have final answer. Now suppose we are given a question linear upon root of quadratic, working rule will be same. We will take first step, we will take linear part, this is 5x plus 4 as a into derivative of quadratic only without root. Root नहीं लेना, root के अंदर जो quadratic part है सिर्फ उसका derivative, that is 4x plus 16 plus b. Now comparing both sides, coefficient of x is 5 in LHS, coefficient of x, if I open up this bracket, it is 4a. So we are getting value of a as 5 by 4. Secondly, comparing constant terms, 4 on LHS is constant, on constant on RHS is 16a plus b. Putting value of a की value we just find out, it is 5 by 4. If I put here 5 by 4, 16 into 5 by 4 plus b. Now it is 20, so b is minus 16.
4 cancel this one, this is 20, so it is minus 16. Value of A is 5 by 4. Now we have got two values, values of A and values of B. Now I can split this 5x plus 4 as A into means 5 by 4 into 4x plus 16 and B as minus 16. If I open up this whole, अगर मैं इस पूरे को simplify करता हूँ, then I will get this 5x plus 4 means 5x plus 4 can be written as this. 5x plus 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Now replacing this 5x plus 4 by this part here in question. Now question is 5x plus 4 is replaced by this 5x by 4, 4x plus 16 minus 16. Whole divided by root of this quadratic part 2x square plus 16x plus 1 dx. Now next step in working rule is to split this into two parts. First part this upon this whole, second part 16 upon this whole. So first part 5 by 4 constant है बाहर ले लिया. This is 4x plus 16 divided by square root of 2x square plus 16x plus 1 minus 16, 16 upon this whole, 16 को बाहर लिख दिया. This is 16 upon root quadratic 2x square plus 16x plus 1 dx. Now first part will guaranteed will surely be substitution method type based. So if denominator is taken as t, in first part t is 2x square plus 16x plus 1, then dt will be 4x plus 16. ये हर बार इसका डेरिवेटिव आएगा. रीज़न क्यों आएगा? क्योंकि जब हम यहाँ एज्यूम करते हैं तो हम डेरिवेटिव ही लेते हैं इसको. px plus q इक्वल्स टू a इंटू डेरीवेटिव ही लेते हैं. दैट्स वाई इट विल ऑलवेज बी डेरिवेटिव. फर्स्ट पार्ट हमेशा सब्सटीट्यूशन से ही होगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव बाय टेकिंग t. Now in this question px plus q replaced by this one, split into two part, first part by substitution, second part by completing square. Now first part is 5 by 4 dt upon square root of t इसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप? रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. 2 is taken out common, so out of the root it will be root 2. We are left out with x square plus 8x plus 1 by 2 dx. This is solvable, directly solvable. This is to be solved by completing square, but we integrate them all together. एक साथ करते हैं, अलग अलग हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि एक c इसका लिखना पड़ेगा, एक c इसका लिखना पड़ेगा, c1 c2 लिखने पड़ेंगे. दैट्स वाई हम जब भी दो पार्ट या तीन पार्ट में क्वेश्चन होता है एक साथ इंटीग्रेट करते हैं. नाउ दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर मेथड. मैं इसको रफ में कर देता हूँ. x का कोफिशिएंट का हाफ दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16. हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, उसका स्क्वायर किया दैट इज 16. मीन्स वी नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16 हेयर. तो 16 अगर हम ऐड करेंगे, फर्स्ट पार्ट विल बी x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 16 किया, माइनस 16 करेंगे, देन माइनस 16 प्लस हाफ विल बी प्लस हाफ माइनस 16. इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज माइनस 32 प्लस 1 मीन्स माइनस 31. आई कैन से इट इज x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 31 बाय 2. दिस विल बी कन्वर्जन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पार्ट. क्या किया है हमने? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x था 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 किया और माइनस 16 किया, प्लस 16 मर्ज्ड विद दिस वन x प्लस 4 का होल स्क्वायर and plus half minus 16 is simplified here. Now replacing this question in next step 5 by 4 dt by root t minus, I am rationalizing by root 2, so it will be 8 root 2 1 by
this is x plus 4 whole square minus square of this constant is root 31 by root 2 whole square. Now first part is direct integrable. 1 upon root t का इंटीग्रेशन होता है 2 root t, ये आपको लर्न रखना चाहिए. 1 by root t is always root t, that is 2 root t. Now integration of 1 by root t minus 8 root 2 as it is. Integration of this type, root of x square minus a square. Formula, using formula, it is, यहाँ 1 by a 1 by 2 कुछ नहीं होता, it is log modulus of x is x plus 4 here, plus question part as it is, denominator as it is, x plus 4 whole square minus root 31 by root 2 whole square plus c. Now in next step, what we can do to cancel with this one, it is 5 by 2 square root of t is replaced by original function 2x square plus 16x plus 1 minus 8 root 2 log x plus 4 plus this has to be simplified, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. I can directly get its simplification, क्योंकि ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है. So I can replace this one on simplification, we will get this one. So I can directly write this part within square root, it is x square plus 8x plus half. This is my final answer. So this way it is solved. Now example 3 is 3x multiplied by root quadratic. This is of third type. Linear multiplied by root. Linear का मतलब ये नहीं है कि हर बार जैसे कोई 3x है तो प्लस में कुछ और भी होना चाहिए था. We will consider it like this. px plus q form तो ये है. This is linear form. Now linear multiplied by root quadratic. If it was direct root quadratic only, अगर ये नहीं होता तो सीधा computing square method था. अब यहाँ हम क्या करेंगे? First step, take this linear part equals to a into derivative of quadratic part, only quadratic part without root. Derivative of quadratic part is 2x plus 3 plus b. Now comparing both sides, step 1 हो गया है working का. Comparing coefficients of x or equating coefficients of x, 3 is equals to 2a. This way we have value of a as 3 by 2. Now comparing constant terms, it is 0 on LHS, यहाँ कोई constant plus में है ही नहीं, equals to 3a plus b. Constant term एक यहाँ है 3a एक b. Now we have a is 3 by 2 means 9 by 2. So value of b is minus 9 by 2 here this time. Now next step, we have to replace this 3x by this whole. So I can write this 3x, it will be replaced by a into derivative of quadratic plus b, which is negative here minus 9 by 2. Now this question is converted 3x into root of this x square plus 3x plus 2 dx is converted into 3 by 2, 2x plus 3 minus 9 by 2. This whole thing is to be multiplied by quadratic x square plus 3x plus 2 dx. Next step is to split the question. अब हम इस question को split करेंगे. One along with a part, second along with b part. अब यहाँ denominator नहीं है but bracket है. This root is to be multiplied by this and root multiplied by this. Expanding bracket, we will get two parts, this into this and this into this. First part I am getting is 3 by 2 integration of 2x plus 3 multiplied by root x square plus 3x plus 2 dx. Second part is 9 by 2 into this
It is x square plus 3x plus 2 dx. Now again we have two questions and again first part is to be solved by substitution method. रूट के अंदर वाले पार्ट को t लेना है, दिस इज dt ऑटोमेटिकली बिकॉज वी आर कंसीडरिंग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हम लेते हैं. नाउ this is to be solved by completing square method just like in previous video. Now this is 3 by 2 root t dt. I am not showing working, you can show working, working आपको दिखाना होगा taking this inner part as t. So 2x plus 3 into dx will be dt. What is left? Root t dt. Minus 9 by 2, completing this by completing square. 3 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 3, 3 का हाफ 9 by 4 यानी कि 3 by 2 का होल स्क्वायर. Here we will have to add and subtract plus 3 by 2 whole square and minus 3 by 2 whole square. If we add and subtract square of half of coefficient of x, first part is x plus 3 by 2 whole square. यहाँ coefficient of x 1 था तो एक स्टेप हमारा बच गया है. नेक्स्ट स्टेप इज 2 minus this 9 by 4. So 2 minus 9 by 4, we are getting 8 minus 9, that is minus 1 by 4. We can say 1 by 2 with negative sign whole square dx. So मैंने डायरेक्टली किया है. You have to show working, you have to do working so that there is no error, कोई mistake ना हो. You have to make ensure. Now here in this part it is directly integrable and second part is to be solved by using formula of root x square minus a square type. First type 3 by 2 root t is t raised to the power 3 by 2. रूट का मतलब पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 किया 3 by 2 divided by 3 by 2 will give us 2 by 3 here minus 9 by 2. Now root of x square minus a square formula x by 2 question as it is x plus 3 by 2 whole square minus 1 by 4, then minus a square by 2, a square is 1 by 4 by 2, and then integral of this part in denominator, that was log x plus quotient, x plus quotient, that is x plus 3 by 2 whole square minus 1 by 4. That part is in mod plus c. Plus c आएगा. Yes. Now we will replace value of t. These are cancelled out. T is x square plus 3x plus 2 whole raised to the power 3 by 2 minus 9 by 2. This is 2x plus 3 by 4. थोड़ा simplify किया. This is on simplification will give us same thing, x square plus 3x plus 2. Next is minus 1 by 8 log modulus x plus 3 by 2 plus root of again same quadratic क्योंकि उसी से बनाया गया है x square plus 3x plus 2 plus c. This is final answer of this type. So ये तीन टाइप हमने डिस्कस किए. Now on the basis of these types of question working सब में सेम रहेगी. You can try and practice exercise 7.4 के questions, question number 16 to question number 23. They all are of this type, इसी टाइप के हैं. एंड एक्सरसाइज 7.7, 7.7 का सप्लीमेंट्री पार्ट है एनसीईआरटी के लास्ट में. यू कैन सॉल्व दैट वन. वहाँ 3 क्वेश्चन हैं इसी टाइप के हैं सप्लीमेंट्री में. लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक. 7.4 में क्या टाइप है? पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक. यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. या फिर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय
रूट क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इस टाइप के मिलेंगे। 7.7 के सप्लीमेंट्री में क्वेश्चंस हैं px प्लस क्यू लीनियर पार्ट multiplied by root quadratic. Working is same in all. This way, now we have completed exercise 7.4 and 7.7 completely and you can solve all questions of 7.4, 7.7. सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि बस वैल्यूज़ चेंज होंगी, मेथड चेंज नहीं होगा, वर्किंग रूल विल बी सेम, यहाँ कोई ट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चंस को आपको पहचानना भी बड़ा इजी है। यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। अगर ऊपर 1 है तो पिछले वीडियो में हमने किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कोई लीनियर पार्ट आ गया, x आ गया या x के साथ कुछ और है, देन आई कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड, दिस टाइप ऑफ जो हमने अभी किया है px प्लस क्यू वाले मेथड से। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एंड नाउ एक्सरसाइज 7.4 and 7.7 both are complete. Now practice as much as you can. Thank you.